Hello, everybody. My name is Gulrayz. I'm the current chair of APPNA YPC, as well as a practicing hematologist in Medical College of Wisconsin. We are kicking off a new series this year, which will focus on financial well-being for physicians, especially young physicians. We'll try to. It's not going to be an extensive lecture on how to be financially savvy. It will be more of a primer of a session where we just discuss the idea of the financial well-being, kind of like sow that seed, and hopefully people will start grasping on it and become a lot more knowledgeable about their own financial well-being. I have my guest today with me, Dr. Umar Tariq, who's a very dear friend of mine, has been part of the APNA YPC for the last many years. He's also my financial mentor. He has served as financial mentor for many people. He's also a practicing interventional radiologist based out of Illinois. Um, how are you, Umar? Assalamu alaikum. Thank you. Thank you very much for having me, Gulrayz. I'm fantastic. Thanks for the kind, elaborate introduction. I don't think I deserve it, but thanks. Thanks again. Moving on, एक general notion है within the physician community that most physicians are actually living paycheck to paycheck. Mhm. Um, they, what can you do to break this cycle? Like, do you think everyone should be investing in the market, or the money needs to go somewhere? Like, what do you recommend to a resident? Like, how can they maximize their dollar that's sitting in that account right now? यार गुलरेज प्रॉब्लम ये है कि वी डोंट गेट एनी फॉर्मल एजुकेशन and forget about formal education. We don't even get any informal education. It is not even a topic, right? A topic of discussion. Think about how many times you and me have talked, right? And how many times we talked about finances till like I made a group and I started doing this, or you know, typically this is not even one of the topics we talk about. We talk about religion, we talk about politics, we talk about family, career, profession, whatever. वी नेवर टॉक फाइनेंसेस. हमें अपनी सैलरी शेयर करते हुए शर्म आती है. हमारे 401k में, आईआरए में कितने पैसे पड़े हैं वो बताते हुए शर्म आती है. हमारी चेकिंग और सेविंग्स में क्या है, हमारी सैलरी हमें कम मिल रही है, ज्यादा मिल रही है, हम वो बातें नहीं कर सकते. जबकि अब जो लेटेस्ट मॉडल है, लोग अपने पेचेक ओपनली दिखा रहे हैं. आप गूगल करो, आपको पता लग जाता है कि व्हाटएवर एनीबॉडी एल्स इज मेकिंग. सो आई थिंक वो पहला, और ऑफ कोर्स यू डोंट नीड टू डू दैट पब्लिकली विद एवरीवन, बट जस्ट गेट अ लिटिल मोर कंफर्टेबल, यू नो, विद द पीपल यू ट्रस्ट. Have a conversation to what to do. The reason people go paycheck to paycheck and come in their 60s without having a 401k or any money in your 401k or IRA is like, वो सारी जिंदगी उन्होंने बस ये सोचा था टनल विजन के साथ पढ़ना है, पैसे कमाने हैं और पैसे डालने हैं अकाउंट में. आई नो पीपल हु हैव 2 to 4 million in their account and they never invested it just because nobody told them how to. और वो एट द सेम टाइम वो क्यूरियोसिटी भी नहीं थी, वो तजस्सुस भी नहीं था कि जाके देखते हैं यार इस पैसे का करना क्या चाहिए. और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में, इंडिया में स्टॉक मार्केट में स्कैम बहुत होता है. तो देर इज अ वेरी बिग फियर कि यार स्टॉक मार्केट में पैसे डूब जाएंगे. मेरा भी ऐसा ही था. ठीक है, पैसे डालेंगे क्योंकि यू हैव ऑलवेज हर्ड स्टोरीज. कोई मामा, चाचा, ताया, कोई ना कोई होता है हु हैज लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन स्टॉक मार्केट, राइट? So it's always better to not do. The fear of unknown always keeps you away from doing the unknown. Whereas in US, it's more about education. It doesn't matter how much money you make. Start developing good financial habits from day one. Write down your expenses. Figure it out. आपका 3,000 का, 4,000 का पेचेक है. Figure out वो किधर किधर जाता है. रेंट कितना है आपको, ग्रोसरी में कितना लग रहा है. जस्ट मेक एन एक्सेल शीट और पेपर पे लिख लो भाई. गूगल शीट्स पे करो किसी तरह. सम हाउ डू द मैथ कि ओके मेरा 4,000 पेचेक है. आई एम गेटिंग 3,000. आई हैव 3,000 3,200 के एक्सपेंसेस हैं, या मेरे 3,600 के. आई नीड टू कट देम डाउन. अगर आप 100-200 भी बचा लोगे ना, और उस 100-200 को आप रॉथ आईआरए में, रॉथ 401k में, यू कैन पुट इट इन whatever retirement account or even a brokerage account and use that money to invest wisely. When you come to the US, you start seeing all the bling, right? You just landed in Chicago. आप Magnificent Mile पे जा रहे हैं, Maserati भी खड़ी है, Mercedes भी खड़ी है, and this is a world of credit. You can always take a loan and get a car. Um, what are some of the common mistakes that people end up doing that negatively affect people? Not today though, maybe in the future, and something that they should avoid. I will say chasing brands. You know that those brands could be of the cars, of the clothes. Like it was said in that movie of Ranveer Singh, "अपना time आएगा." आएगा भाई, आपका time भी आएगा.
But this is not the time, in your 30s, 40s, that's not the time. Make good financial decisions so that you can still use this, luxury stuff, buy a Maserati or buy a Chanel bag or do all this. But after you are financially disciplined, after you have established a good base of money, then you have play money to do whatever you want. The fact is कि अगर आपकी तनख्वाह 20,000 है और आपके खर्चे 25,000 हैं, या अगर आपकी तनख्वाह 50,000 है और आपके खर्चे 70,000 हैं, 70,000 हैं, राइट? तो how do you expect to save any money? To have good financial habits from day one. It doesn't matter. Nobody gets rich from a good paycheck. In America, it's not about how much money you make. It's about how much you save. देखो जब बेचारा वो माइकल जैक्सन मरा था तो वो भी बैंकरप्ट था. इतने सेलिब्रिटीज हैं, दे मेक मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड दे आर बैंकरप्ट somehow. It's not about how much money you make. In US, it's only about how much money you save. Make your life easy. Make things simple. पर्सनल फाइनेंस शुडंट बी अ थिंग दैट यूर लाइक ओके अच्छा ये मैंने इतनी 10 कंपनीज की बैलेंस शीट्स देख के डिसाइड करना है, मैंने फिर एक्टिव स्टॉक पिकिंग करनी है, फिर मैंने इस लिमिट पे इन्वेस्ट करना है इसमें. वो सब चीजें सही है इफ यू आर डूइंग दिस एज अ फुल टाइम जॉब और इफ यू हैव वे टू मच फ्री टाइम. द प्रॉब्लम विद फिजिशियंस आर ए वी आर टू बिजी, B, we are already dealing with too many complex things. We don't need another complex things. So just deliberately make things very simple, and then make it easy for yourself. If you're doing simple things, you made them easy for yourself, and you're doing them in a disciplined fashion at regular intervals, you will end up beating more than 90% of the people who have way more knowledge than you. So make it easy, keep it simple, and make sure you're disciplined. जो अच्छी आदतें हैं, good financial habits of investing at regular intervals, no matter whatever happens, don't let FOMO catch you. Don't try to time the market. Just do dollar cost averaging in the index funds, and that's like 90% of the people who become millionaires. I think there is a book, Everyday Millionaire. You can read that book that talks about simple people like पोस्टमैन है, बस ड्राइवर है, कैब ड्राइवर है. ये लोग इस तरह इतने पैसे उनके पास हो गए, दे वर मल्टी मिलियनर्स बाय द टाइम दे रिटायर्ड एज कम्पेयर टू लेट्स से डॉक्टर्स, engineers or lawyers, because they had better financial discipline than any of us. And now you're signing up for your first big job. आपको साइन ऑन मिल रहा है, और आपको पैसे माशाल्लाह दिख रहे हैं, वो 14,000, 15,000, 18,000 महीने के आने वाले हैं. तो in your experience, after working with so many people over the last few years, what are some big mistakes that people do upfront as soon as they see those big checks? I know this might be a same conversation that we have covered in the last 20 minutes or so, but just give us some examples and see, like, maybe we can instill some knowledge to our people. Sure, big vacation, 10 to 20,000 की vacation, big diamond ring, big purse, big car आपने ले लिया, ये सब कुछ. देखो ये सब करना है, ये नहीं मैं कह रहा कि नहीं करना. Delayed gratification, एक there was a experiment I think at Stanford जिसमें उन्होंने बच्चों को दी थी कैंडीज, और ये था कि आप आज एक कैंडी खा लो या कल 3 कैंडीज खा लो. तो देर वर सम किड्स हु पिक्ड कल 3 कैंडीज खा लेंगे. देर वर लॉट ऑफ किड्स, उन्होंने कहा भाई अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश, तो आज खाते हैं ना, कल तक क्या वेट करें. देन दे ट्रैक्ड दीज किड्स फॉर नेक्स्ट 5 decades. उन्होंने देखा द किड्स हु हैड दिस प्रैक्टिस और दिस डिसिप्लिन and faith in delayed gratification, they did way well financially in life. So it's the same concept, delayed gratification. आपको साइन ऑन बोनस मिल रहा है, यू कैन यूज दैट साइन ऑन बोनस टू बाय अ लग्जरी ब्रांड. आपने खरीद लिया, एक बड़ी गाड़ी खरीद ली, महंगे कपड़े खरीद लिए, एक्सपेंसिव वेकेशन कर ली, यू कैन डू ऑल ऑफ दैट. और यू इन्वेस्ट दैट मनी, you let it grow, you use the growth of that money to fulfill your wishes, whatever those are. चाहे जो करना करो भाई, आपका पैसा है, you use it the way you want to seek happiness, whatever way it serves you. But if you practice the delayed gratification, invest that money, let it grow, and then do all this after 3 to 5 years, I'll say the first 3 years are the most financially crucial years of attending hood. कि अगर आपने उसमें अच्छी तरह पैसे इन्वेस्ट कर दिए, आपकी जो ग्रोथ है पैसे की, ऑफ कोर्स अगर किसी ने 35 की एज में इन्वेस्ट किया है, उस पैसे को ग्रो करने के लिए 30 इयर्स हैं, राइट? बिल्कुल. बट अगर उसी बंदे ने 45 55 में स्टार्ट किया तो वो पैसा सिर्फ 10 से 20 साल ग्रो करेगा. और आपकी सबसे ज्यादा ग्रोथ जो होती है पैसे की, वो अर्ली ईयर्स की होती है, राइट? सो यू वर 35, दैट मनी इज गोना probably grow 20 times as compared to the money that you invest in 45 at the age of 45. That will only grow 5-10 times. तो इसलिए that money is way more valuable. So I see sign-on bonus as a very valuable asset. And now your job is not to spend that money.
Now your job is an asset manager, a financial manager whose job is to manage this financial asset responsibly and grow it, let it grow. So again, you can do it to each their own. If somebody really wants to spend the money in all these luxury things and brands and uh, vacations and all, I will say थोड़ी आप तरीके से कर लो कि अच्छा चलो ये आया साइन ऑन बोनस 20% आप कर लो, 10 to 20% कि ठीक है दिस इज अ सेलिब्रेशन ऑफ माई सक्सेस, मैंने 3 साल रेजिडेंसी की, बट यूज द बल्क ऑफ दैट मनी इन योर लॉन्ग टर्म फ्रीडम. Is there anything else that somebody needs to address if they're feeling that crunch of going from paycheck to paycheck? How can they get out of this vicious cycle where their paycheck is already committed even before it comes to them? I think good financial habits, just start from little. Get 3 to 5% of the paycheck will need to be invested. और एक चीज ये है कि बिफोर यू गेट द पेचेक, सेट अप ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग इनटू 401ks और IRAs. तो आपको तो पेचेक आएगा ही नहीं ना, जब आएगा नहीं तो खर्च नहीं होगा जब अकाउंट में. और दूसरा एक होता है कि स्प्लिट आपके, रेदर देन गेटिंग द एंटायर पेचेक इन वन अकाउंट, हैव 5 to 10% गोइंग इन अ डिफरेंट अकाउंट जिससे आप खर्च नहीं कर रहे. तो ओवर टाइम दैट ऑल्सो बिल्ड्स. पेचेक टू पेचेक इज अ चॉइस एट द एंड ऑफ द डे. यू नो जो लोग पेचेक टू पेचेक रहते हैं, मैंने देखा है, they might be single and might be having 4,000 during residency, they're living paycheck to paycheck. They become an attending, they make 80,000, 90,000 per month, they're still living paycheck to paycheck. And then I've seen people who have $20,000 while as a resident, and then they have $2 million as an attending, making only 10 to $15,000 as an attending per month. They still were able to save that much. It's not how much money you make. It's not about how much money you make. It's more about how much you're investing, what percentage you're investing. Somebody who's investing 5% of their paycheck every month is better than somebody who invests a lump sum amount. So figure out that number, whatever works for you, and start from low number. Don't go for investing 30% of the paycheck from day one. Start with 1%, 3%, 5%, and then gradually increase after every 6 months or after every year.